Center of mass of a solid hemisphere of radius r put an equal to sign equal to 3 capital R upon 8 from its center on the symmetrical axis. 3 capital R upon 8, 3R by 8. Hope you got it. From its center on symmetrical axis. So can you repeat? Center of mass of solid hemisphere of radius capital R. Center of mass of a solid hemisphere solid of radius capital R is 3R by 8, 3 capital R by 8. From its center on symmetrical axis. So students, the answer for this will be still less than R by 2 itself only. 3R by 8 is less than R by 2. Students, now we'll be going for your mathematical relation for Rudy. Wanted to ask something, Rudy. Rudy? Rudy, are you there? Can you hear me? Knock, knock. Okay, fine. She doesn't want. Okay, fine, students. Now let us go for a plate, students. Okay, students, I told you about center of mass for a semicircular ring. We consider this at a height of h is equal to 2r by pi. Okay. Now we are going for a semicircular plate. Now you have to get the relation. Anybody who has thought onto that particular mathematical derivation, students? Yes, students, anyone? Center of mass of a thin uniform semicircular plate of radius r. Instead of plate, you can also put forward the word disk or plate. Since O is the center of the semicircular plate, R is the radius, and the dotted line which you see is the axis of symmetry. It's along y-axis. Any one of you all? Yes, come on, Farhan, Anaita, Aisha, Ayush,
Mariam, are you there in the lectures, Mariam? Mariam, can you unmute yourself? Yes, sir. You're from Panvel branch, Yes, sir. and you've not been attending lectures. After a long time, you're back into the lectures. Reason? Mariam, what's the reason? Mariam, I'm asking you something. Can you reply? This is what the problem is with students. See, students, you come to know about it. Even I know it, which students remain present, which students remain absent. And I know there are a few more students over here. But if I speak out to one, that means it goes to the others also. Students, just wait for the day when there is an interaction with your parents. When there is a PTA meeting, parents teachers meeting, and if I'm facing your parents, students during that time, just see everything will be spoken, what exactly is happening, how exactly your kids are doing studies. I'm going to tell each and everything to your parents, and they have the rights to know it. This is not the way to do study, students. Okay, let's get back, students. Center of mass of a thin uniform semicircular plate or a disk of radius r. So the answer for this is it is on the axis, students, and the answer is 4 r upon 3 pi. Now, can anybody get an answer for this? Students? Students, मुझे बताओ कि जब भी मैंने रिंग लिया था, students, what did I explain to you for a ring? Or for a thin uniform rod, when I explained to you, what did I explain to you? Did we took in simple small elements, students? We constructed a rod, Yes, sir. a thin uniform rod. Okay, we constructed a rod in that case, and that particular rod को हम लोग ने align किया था. The infant element we aligned it one after another, students, and we constructed the entire thin uniform rod. So we took a mass dm, length was dx, and we went for lambda mass per unit length, and then we Yes, found out sir. the limit. तो वैसे ही फिर हम लोग ने जब भी रिंग बना दिया था सर, उसका सभी सर्कुलर रिंग बनाया था स्टूडेंट्स, फॉलो वन. तो वहां पे सेम मास को हमने अलाइन किया था फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू 180. तो लिमिट्स तुम्हें मिल गए थे. फिर एलिमेंट को हम लोग ने सेंटर से दूरी के ऊपर ले लिया था और आर को ले लिया था, और फिर उसको हमने रिजॉल्व किया था दो कंपोनेंट्स में. लेकिन मास तो एक्स एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूट था ही नहीं. Mass was all the way along the y-axis we consider. The center of mass with respect to x-axis was 0. फिर इंटीग्रेशन किया था स्टूडेंट्स. वैसे ही जब भी तुम्हें यहाँ पे ये सॉलिड यानी स्टूडेंट्स ये दिया क्या मालूम है, ये तुम्हें एक डिस्क दिया है, ये ऐसे सेमी सर्कुलर डिस्क दिया है. थिंक एज इफ इट्स अ 2 रुपी कॉइन बट आधा वाला. स्टूडेंट्स ये 2 रुपी कॉइन है, ये पूरा मैटर है, यहाँ पे हॉलो नहीं है. अब ये डिस्क बनता कैसे है स्टूडेंट्स? हाउ एग्जैक्टली मेकिंग अ डिस्क? Students, assume that this particular disk is made up of thin uniform wires. A disk, let us assume it's made up of thin uniform wires.
Here also we will take a small portion dx. क्या बात है, very good, Neha. Sir, it was not me. अरे हाँ, लोगो चेंज है, चेंज है. Okay, it was Pio. Very good, Pio. स्टूडेंट्स अभी देखो हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है स्टूडेंट्स, ये वाला. ये क्या है स्टूडेंट्स? सोचो कि एक थिन यूनिफॉर्म स्ट्रिप लिया है स्टूडेंट्स. इट्स मेड अप ऑफ वन स्ट्रिप. लुक ओवर हियर, ये एक स्ट्रिप है स्टूडेंट्स. ऐसे स्ट्रिप को अगर मैं सेंटर से अलाइन करना शुरू कर दूं, लुक एट दिस. अगर मैंने स्ट्रिप को सेंटर से अलाइन करना शुरू कर दिया, if I start aligning the strip, if I start aligning the strip from the center, and if I take it entirely, can I say I'm going to get a disk? Yes. What exactly the strip is? If you look at the strip, it's a thin uniform strip, students. And students, this strip is made to be bent in form of a semicircle, whose distance from the center is x. Listen, students, carefully. Whose distance from the center is x. So, मुझे बताओ, what is the length of the strip? So, can I say this becomes pi r? So, can I say this becomes pi x? क्या ये clear हुआ, students? Yes, sir. Yes, sir. इसका ये जो breadth मैंने लिया है वो ये since it's an infinitesimal element, तो उसको breadth मैंने dx ले लिया है. तो ये मैंने breadth को क्या ले लिया? Breadth I've taken as equal to dx. Agreed? Yes, sir. And I'll start aligning such kind of elements from the center, students. I'll start aligning such kind of elements from the center, and gradually I'll take it till the end. That means my lower limit x is equal to 0 to x is equal to r. Did I get my lower limit and did I get my upper limit? Now, students, the two limits. Yes, sir. Yes, sir. Now tell me, for a thin uniform semicircular disk or a plate, students, should I go for linear mass density? Should I go for surface mass density, or should I go for volume mass density, students? Surface mass density. Why surface mass density? Few. Because Sir, it it was will take the area. अरे वो डीपी से मिस्टेक होता है. मेरे को कंफ्यूज कर देता हूँ. हाँ बोलो. Sir, it is because it is a thin plate. So volume. So we will not consider the volume. Okay, it's a thin plate, so the thickness is negligible, so we will not consider its volume. We'll simply consider its surface area. Surface area. Okay, so when I consider surface area, students, so what exactly the area we consider over here is? So now we go for sigma. Students, sigma is what over here? Sigma is mass per unit area of the disk. Let us say the mass of this particular element is dm. What is the area of this particular element will be? Pi So x area, dx. yes, it's dA. I'm getting it. So it's dm by dA. And what is dA? Will be length into breadth. Notice length into breadth will be equal to pi x into dx. क्या ये clear हुआ? Sigma in terms of dm and area. Yes, sir. Now I need to find out the center of mass, students, for the element part of it, students. So let us go for your x coordinate and y coordinate of center of mass. अब मेरे को बता सकते हो x coordinate y सेंटीमीटर y cm कैसे निकालोगे? चलो पहले मैं बताता हूँ. मैं तो पूछ रहा हूँ, can you find out xcom of center of mass? Sir, 0. Q0. Reason No. क्या? Sir, Q0. because we have Reason. to look into y-axis. X-axis will be 0. Why? What is the reason you have to look at y-axis? If you look at y-axis, x-axis won't feel bad. You're making x-axis to feel bad. ऐसे नहीं Sir, करते हैं. x-axis अगर पे नहीं है ना. दो जन रास्ते पे चलते हैं, तुम किसी एक को ही देखोगे तो दूसरा बुरा नहीं मानेगा. हाँ पियो, it's not good. You can't do like injustice like that. बोलो. Why don't you look at x-axis? Why do you look at only y-axis?
यहाँ से तुम कैसे पिकअप करोगे? The most intelligent person of the class will be able to answer, and I have few students who are most intelligent. Farhan, Akshat, Arif, Anita doesn't answer, Ashna, Aryan, Aisha, Ayush, आयुष्मान, क्रिस्टी, हर्षल भाई तो अभी आए हैं मीरा रोड वाले। क्या हर्षल भाई कैसे हो? बहुत जल्दी आ गए लेक्चर में, आपके लिए वेट कर रहा था। मरियम, हु इज अ विजिटर, who visits IIT and have occasionally. Nikhil, who doesn't answer. Oj, who doesn't answer. Piyush, who doesn't answer. Pranay, at times. Pratham, I don't know, at times. Rishabh, I know they've stopped saying anything. Rushika doesn't. Valentino rarely. Veer doesn't. Vruddhi not. Okay, so I am very good. How can you say? How can you say? So how can you say that CM will be along that? Sir, because the distribution of mass will be more on that side. No, मतलब more on. रुद्धि आंसर देन। सर को क्वेश्चन मार्क कर दिया तुमने, तो आंसर करो। आंसर नहीं करते हो तुम, जल्दी से बोलो क्या करोगे अभी। रुद्धि आई है, मैंने पहले भी बोला लेकिन रिप्लाई नहीं करते तुम। अगेन शी इज टाइपिंग इट, सी फ्रॉम बोरीवली ब्रांच। ओके फाइन, डजंट मैटर ब्रो, फाइन फाइन, डजंट मैटर। ओह शी इज जय स्वामीनारायण और व्हाट एवर इट इज, है ना? So Buddha. बुद्धा, यस, गुड। स्वयं ने बोला था, ऑफ कोर्स नेहा करेक्ट, स्वयं ने भी यही बोला है कि सेंटर ऑफ मास विल बी अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एक्सिस। स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, जब भी मैंने इसका डेरिवेशन पूछा, मैं यहाँ पे आके तुम्हें पूछ रहा हूँ, पीयू ने बोला कि हम वाई एक्सिस को देखेंगे, एक्स एक्सिस को देखेंगे, लेकिन इतना पता नहीं चला। स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन में बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स मैं क्या व्हाट एग्जैक्टली आई ड्रू, स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ मैंने क्या क्या ड्रॉ किया है। मैंने क्या ड्रॉ किया है? तुम बोलेगा ना सर आपने एक थिन यूनिफॉर्म रिंग ड्रॉ किया है। सर एक थिन यूनिफॉर्म रिंग ड्रॉ किया है, और इसी के लास्ट लेक्चर में हम लोग ने थिन यूनिफॉर्म रिंग के लिए वेयर इज द सेंटर ऑफ मास फॉर अ थिन यूनिफॉर्म रिंग। सो द थिन यूनिफॉर्म रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास इज लाइंग वेयर ऑन द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर हम लोग ने सॉल्व किया था, हमने ये रेडियस वेक्टर आर लिया था, यहाँ पे थीटा लिया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया था, वर्टिकल कंपोनेंट लिया था, फिर एक्सयूएम निकाला, वाईसीएम निकाला। वहां पे मैंने एक्सयूएम फॉर, इसके लिए मुझे चाहिए पहले एक्सयूएम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि उसके बाद में तुम इंटीग्रेशन करोगे ना, वो 0 आएगा। But YCM, yes, YCM exists. What is YCM over here? What is YCM? So the YCM for this particular thin uniform ring. Do you remember the formula? इसके पहले मैंने फॉर्मूला बोला था, what exactly 2r by pi, लेकिन यहाँ पे 2r की जगह पे क्या है? x है ना। ये देखो at what distance this is x, ये x है, तो what exactly our YCM will be 2x by pi। क्या ये क्लियर हुआ for this particular ring? Students, ये ring thin uniform ring, इसका YCM पता चला 2x by pi। ये कहां से आया? फ्रॉम द प्रीवियस डेरिवेशन। स्टूडेंट्स यही रिंग का एक्सयूएम 0 है, लेकिन वाईसीयूएम क्या करोगे तुम? इंटीग्रेशन ऑफ y into dm upon integration of dm। now put down the limits। put down the 0 limits, to what are the R. limits? ये 0 to r हो जाएगा। आई गेट इट। एंड इंटीग्रेशन ऑफ dm को तुम m लिख सकते हो। स्टूडेंट्स क्या समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir.
और ये क्या है, ये YCM है, ये YCM, ये जो YCM है वो ये पार्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम पहले एलिमेंट को ले रहे हैं ना स्टूडेंट्स। YCM, ध्यान से सुनना, YCM of the disk, please everybody listen carefully. YCM for the semi-circular disk is equal to integration of YCM of thin uniform semi-circular ring into DM upon integration of DM. But this will be from 0 to R, क्योंकि तुमने रिंग को अलाइन किया है कहां से, सेंटर से लगाते हुए तुम पीछे की तरफ जा रहे हो, और ऐसे ऐसे तुम प्लेट्स अरेंज करते जा रहे हो रिंग्स को, एंड thereby it becomes the entire plate. अब भी क्लियर हुआ तुम्हारा? Yes, sir. Please, is this part clear to everybody? अगर ये तुम्हें कनेक्ट हो गया, you'll be able to crack the question. That is why students your axiom is 0, क्योंकि यहाँ पे हमें axiom मिला ही नहीं था. अगर मैं R को रिजॉल्व कर रहा था स्टूडेंट्स, अगर तुमने लास्ट लेक्चर में सुना होता तो ये R है, ये मेरा ये R cos थीटा हो जाएगा, ये R sin थीटा था, हमने d थीटा भी लिया था, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. एक्सियम के अंदर हम लोगों ने क्या लिया था इन टर्म्स ऑफ इट, हमने इसको ले लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या हो जाता है, sin थीटा, उसके लिमिट्स आ रहे थे 0 to पाई, तो sin ऑफ 0 माइनस sin ऑफ पाई, दोनों केस में आंसर 0 ही आ रहा था, इसलिए हम एक्सियम को 0 लेंगे स्टूडेंट्स. अगर एक्सियम for the ring is 0, so axiom for the plate is also 0. But YCM for the ring is not 0. YCM for the ring is 2x by pi. So will there be YCM for the plate? Yes. How do you find out YCM for the semicircular plate? Sir, integrate the YCM of the ring. अभी clear हुआ? अभी ये clear हुआ? Yes, Yes, sir. sir. All the students in the group, students, please show, is it clear? Yes, sir. Swayam, Ruddhi, Yes, sir. okay. Now, can you solve further from here onwards? चलो अभी solve करके आंसर लिख जाओ. Let's see who can get the answer, and I want this answer. Want to finish this? Please unmute yourself. Yes, anybody? Yes, Vriddhi, you got the answer, Vriddhi? Now,
इतना क्यों सोच रहे हो? अभी वाइसियम डाल दो ना। वाइसियम किसका चाहिए? तो बच्चों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग चाहिए, सेमी सर्कुलर रिंग चाहिए। तो देखो तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा सर? आपका वाइसियम फॉर द प्लेट, सेमी सर्कुलर प्लेट और सेमी सर्कुलर थिन यूनिफॉर्म प्लेट अगर लेते हो तो वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ किसका होगा? वाइसियम फॉर थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, और वो वाइसियम क्या है? 2x अपॉन पाई। स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, ये कहाँ से आया? अभी बोल रहा, ये प्रीवियस डेरिवेशन से आया, जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था। ये इसके कंपोनेंट्स लेते हुए, तो तुम यहाँ पे इसको डायरेक्टली ले सकते हो ना, क्योंकि मैंने रिंग को कहाँ पे रखा है? एट ए डिस्टेंस x रख दिया, तो ये तुम्हारा डिस्टेंस x है और यहाँ पे तुम्हारा सही होगा है, इसलिए मैंने ये लिख दिया इनटू डीएम। डीएम को कैसे लिखोगे तुम? हाउ टू राइट ऑन डीएम? आई कैन पुट इन दिस मैनर. Agreed? What is DM? Students, ये तो DM. DM is mass. Cross multiply ये हो जाएगा. Upon what exactly? Surface area of the plate. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. तो कहने से ये होगा pi r square by 2. तो 2 I'll put it over here by 2. बस. What are the limits? सर एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो? Yeah. Who said this? Oh, oh, hello. What happened? Somebody said something. Sir, could you explain it once again? I made it very clear. This is YCOM. YCOM तुम्हें मिला 2x by pi, है ना? Yes, sir. और डीएम को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, तो m इंटू पाई एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एरिया। ये एरिया किसके? पूरे प्लेट का है। पूरे प्लेट का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर बाय 2। पूरे प्लेट का एरिया कितना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट? सेमी सर्कुलर प्लेट, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट इज पाई आर स्क्वायर, उसका आधा तो पाई आर स्क्वायर बाय 2। और ये लिमिट्स क्या हो जाएंगे? Okay, sir. 0 टू आर हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम 0 टू m। अभी क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. नाउ कैन यू सॉल्व फर्दर? यहाँ पे अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स, वन ऑफ द पाई विल गेट कैंसिल्ड. एग्रीड? ये 2 2s are 4. So can I remove 4 as a constant? Yes. Capital M is a constant? Yes. Is pi a constant? Yes. Is r square a constant? Yes. Integration of क्या आ जाएगा? ये देखो, ये x Yes. into x है, ये x into x क्या हो जाएगा? x square into dx हो जाएगा, आया ना? 0 to r upon integration of dm will be m. Is this clear now, students? Sir, it will be pi r square, no? Which one? Sir, 4m by pi r square. Yes, very sorry. Pi r square. R square bar आएगा students. Absolutely correct. ऋषभ. सर मैंने नहीं अभी तुम्हारा इजी हो गया। ये वाइसियम निकाल रहे हो तुम, mm will get cancelled, तो तुम्हारा वाइसियम का आंसर क्या मिलेगा? सर इट्स 4 upon pi r square. What is integration of x square into dx? X cube cube by upon 3. 0 to capital R. So can I say you got the answer for YCM? What's the answer for YCM? Students? 4r by 3 pi. 4 by 3 pi r square
into r cube, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4r/3 is that the answer? Students? यस सर। सर हाँ बोलो। सर हमने डीएम का वैल्यू ऊपर वाले में पाई एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एम अपॉन ए लिया, और Yes. नीचे के इंटीग्रेशन में डायरेक्ट क्यों इंटीग्रेट कर दिया, मतलब वो सब्सटीट्यूट क्यों नहीं किया सर? मतलब ये जो integration of dm है for the entire mass itself only, because this was having the limits from 0 to r. एक देखो दो टाइप्स का इंटीग्रेशन है, एक तो तुम मास को ऐड करते जा रहे हो, वो डिनोमिनेटर में आ गया, लेकिन वो मास को तुम कैसे ऐड कर रहे हो, फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। जब भी मैं 0 टू कैपिटल आर अगर मैं लिमिट्स ले लूं ना, 0 to r if I take it limits, शुभ, तो यहाँ Yes, पे मेरा जो डीएम होगा वो x के वेरिएबल में आएगा, यानी मेरा जो ये x है वो पहले 0 होगा और फिर मैं उसको यहाँ तक लेके आऊँ तो x इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। Because one way of approach we consider is what we're trying to shift the entire ring from the center towards the end, तो वो एक लिमिट्स में आ जाता है। दूसरा the mass is distributed all the way throughout, तो वो नीचे आ गया integration of it. That is why we go for this one as integration of dm will be simply equal to capital M, and this M will get cancelled with this. okay sir, got it. ये हुआ, एक होगा from 0 to M और दूसरा होगा 0 to R. Is this clear? Yes sir. अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लेंथ के हिसाब से जा रहा हूँ, फ्रेंड्स यहाँ पे देखो मैंने m को कांस्टेंट रखा ना, मैंने कैपिटल M is the mass of the entire plate which is constant, तो I'm shifting the mass from 0 to R. In second case I'm taking infinitesimal element and I'm going for the entire one, so that is integration of dm will be capital M. Students, this part what he asked us is very important for a student to keep in mind. तो लिमिट्स के ऊपर ध्यान दो, एक होगा 0 टू कैपिटल R और दूसरा होगा 0 टू कैपिटल M. Is it clear? Yes sir. Now can I erase it, students? Yes, sir. Just a minute. Students, is the board work clear to all of you all? Board work सही दिख रहा है कि नहीं, students? हाँ, students? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, fine. Are you comfortable with this whiteboard and marker का concept, students? Sir, now from the next week, online will be closed. So, Pardon? so from the next week, online mode will be closed. So we will come Online off. mode? What, next week onwards, online mode? बंद हो जाएगा Sir, sir. we'll have offline. only offline classes. Then sir. सारे न्यूज पीयू को मिल जाती है, पीयू एकदम ऑलराउंडर है, सारे सर न्यूज GYCH सर ने बताया था लेक्चर में. हाँ sir. ओके, वृद्धि बोलते सर ऑफलाइन क्लास चाहिए। वृद्धि वेरी गुड, आता हूँ ऑफलाइन क्लासेस के लिए, फिर तुम्हें मैं परेशान करूंगा क्वेश्चन पूछ पूछ के। वृद्धि आप पहचान ही नहीं पाओगे मेरे, हाँ क्या बोल रहे हो? आप पहचान ही नहीं पाओगे मुझे। अच्छा वैसे हो तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, है ना? मेरे भी जासूस में रखूंगा, बोरवली ब्रांच में भी। अब पूछूंगा करके कौन है वृद्धि, पहले से सर मैं टीवी भाटिया मैम। अच्छा, यूट्यूब भी वाटे अटेंड करोगे? अच्छा, वो पहले से उल्लू बनाना शुरू कर दिया है, बोरवली में पहले बोले कि टीवी वाटे में आ रही हूँ करके। वेरी गुड, ओके, डजंट मैटर, एवरीथिंग इज फेयर इन फिजिक्स। सर मैंने जो आपको कल डाउट भेजा था वो आप लाइक आफ्टर लेक्चर एंड वो आप सॉल्व करोगे?
तो वही तो मैंने पूछा था पहले, कब से चिल्ला रहा था वृद्धि, यू वांटेड टू आस्क समथिंग I वृद्धि। didn't तुम है ना, अभी अभी छोड़ो, अभी तुम अभी तुम्हारा जैक स्क्रू एकदम फ्री हो गया, अभी बातचीत करना शुरू हो गया, तो अभी पूछना शुरू, मैंने पहले ही पूछा सर मेरे को शुभ लेक्चर के ने बोला पहले कि ही। आपने भाई छोड़ो, बुलाया। अभी छोड़ो, स्मार्ट मत बनो, तुम बहुत स्मार्ट हो। सही में सर। दोनों तो प्रॉब्लम इजी थे, क्यों नहीं समझ में आया था? सर मेरे को क्लिक नहीं हुआ। पहला वाला क्लिक नहीं हुआ? पहला वाला आया कि पहला वाला भी नहीं आया? नहीं आया मुझे। क्या कर रही है? जी फॉर लैटिट्यूड का फॉर्मूला क्या है? जी एट स्टूडेंट्स, her question was, एक दफे क्वेश्चन रीड कर वापस, मेरे पास अभी क्वेश्चन नहीं हाँ है सर एक सेकंड। इसी फोन में। अभी ये मैं तेरे को एंटरटेन कर रहा हूँ, यहाँ पे लेक्चर के बीच में नहीं होना चाहिए। नहीं सर मैं बोले आफ्टर द बाद में लेक्चर। सबको सॉरी आफ्टर बोल द दे, लेक्चर। बाद में सबको सॉरी बोल देना, क्योंकि नहीं तूने फिर वो आफ्टर। पीयू बोलेगी कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। सर वो हंस रही है, वो मेरे को मैसेज करके हंस रही है। अच्छा, हंस रही है मैसेज करके? हाँ सर। ओके, दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं। No, बोल जल्दी बोल। not at all. हाँ, one end of a massless spring constant 100 Newton per meter and a natural length 0.5 meter is fixed, and the other end is connected to a particle of mass 0.5 kg lying on a frictionless horizontal table. The spring remains. Question is first. So the spring remains horizontal if the mass is made to rotate at an angular velocity of 2 radian per second. Find the elongation of the spring. यस, स्प्रिंग ही बोला ना, स्प्रिंग पूरा बोला ना, स्प्रिंग द मास इज रिवॉल्व्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे मास रखा हुआ है, ये बोला है ना? स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी, एनीबॉडी? ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स। Think as if this is a circular plane, students. This is a center, and over here is a spring, and this is a block. The block is performing circular motion, students. For circular motion, students, which force you need? Students, which force you need? Force centripetal. Centripetal force. Yes, sir. तो यहाँ पे जो फोर्स सेंट्रीपिटल है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे स्प्रिंग रिवॉल्व करेगा विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डोंट यू थिंक सो दैट इज द स्प्रिंग विल स्लाइटली अंडरगो एन एक्सटेंशन, तो उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। Yes, sir. So which force is trying to balance? Restoring force. हाँ है ना? Yes, sir. ये तुम लोग ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा स्प्रिंग फोर्सेस के अंदर? तो Yes. रिस्टोरिंग फोर्स एंड योर फोर्स सेंट्रीफ्यूगल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सेंट्रीफ्यूगल को मैं सेंट्रीपिटल कर सकता हूँ। आ गया तुम्हारा आंसर। सेंट्रीपिटल को कैसे लिखोगे? एम आर ओमेगा स्क्वायर is equal to k into x. Are you getting it? Yes, sir. Ruti got it? Yes, sir. x पूछा है तुम्हें, एक्सटेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह दिया होगा ना, k की वैल्यू दी है ना? स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है ना वृद्धि, कि नहीं दिया है? हाँ नहीं एक सेकंड। हाँ दिया। हे भगवान, 100 देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। जो दूसरा कौन सा था? सर वही एक था, वो पहले वाला मैंने बाय मिस्टेक भेज दिया, ओके तो फाइन, समझ में आ गया। फाइन। अभी सॉरी बोल दे सबको, सबका टाइम वेस्ट किया तूने, सॉरी बोल दे सबको। सर मैंने पहले ही बोला था कि लेक्चर के एंड में भी कर सकते हो आप, जब सब लेकिन करेंगे। मुझे मैंने ये सब मेरे को कहाँ पता, तुमने कुछ बोला ही नहीं, मैंने जब भी पूछा तभी। सर मैं थी नहीं, मेरे को शुभ ने मैसेज करा। Didn't I, when I started the lectures, didn't I say, Vruti, you have to ask something, you want to ask? मैंने Yes, नहीं sir. सुना, मैंने Yes, नहीं sir. सुना। अभी अभी मेरे नाम पहले पे नहीं बिल मत सुना। फाड़, नहीं सॉरी बोल सबको, सॉरी नहीं बोल, वाह रे वाह। सॉरी सॉरी। Okay, fine. So let's move further, students. Okay, students. Now this is next question, students. A semicircular ring is given to you again, students. लेकिन ये कौन सा मालूम है? Semicircular annular ring है, students. Let's see who can get an answer for this. Okay. Students, if I happen to give you an annular ring, having inner radius.
and outer radius. अभी मान जाऊंगा अगर कोई ये सॉल्व करके दिखाए मुझे, ये है सेंटर O. I get it, students. The inner radius I'm taking it as R1 and the outer radius of the annular ring is R2, students. You तुम्हारा आ गया favorite axis, y axis. X axis बुरा मान जाता है, ये y axis है. Okay. So it's now if in case if I happen to give you a semi circular annular ring. Okay. Inner radius is R1 and outer radius is R2. Semicircular and uniform annular ring. Uniform thin annular ring. Students, uniform word आना चाहिए, thin आना चाहिए. Uniform thin annular ring, students. Inner radius is R1. Outer radius is R2, students. Okay. Inner and outer radius, I give it to you, students. I want you to find out center of mass for this particular annular ring. Chalo. That means this is given as certain thickness दिया है, students. ये thickness है. For example, तुम लोग students 10th standard में problems किए होंगे, है ना? Find out the surface area of a circular track in case of a garden. Inner radius दिया है, outer radius दिया है, तो तुम क्या करते थे? पाई आर स्क्वायर बाहर का एरिया लेते थे, फिर अंदर का एरिया लेते थे, बाहर में से अंदर वाले को सबट्रैक्ट कर देते थे, तो तुम्हें एरिया का ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक मिलता था. शायद तुम्हारे नजदीक में कोई गार्डन्स वगैरह देखते होंगे, तो कहाँ पे गार्डन रेक्टेंगुलर होता है, कहाँ पे सर्कुलर होता है. तो रेक्टेंगल होगा तो बाहर का एरिया, अंदर का एरिया, दोनों के बीच में सबट्रैक्ट करोगे तो पाथ है. फिर शायद तुम लोग ऐसे भी कुछ पार्ट स्टोन से भरा हुआ था, उसको निकालना है. ये सारे तुम लोगों ने किया है क्वेश्चंस. तो वैसा Yes, वाला ही sir. आइडिया ले लेंगे स्टूडेंट्स. वैसा वाला है पूरा, यानी पूरा एक प्लेट है स्टूडेंट्स. इट्स अ सेमी सर्कुलर प्लेट. थिंक इन दिस मैनर दैट आई हैव गिवन यू अ सेमी सर्कुलर प्लेट, लेकिन उस सेमी सर्कुलर प्लेट में से मैंने ये सेक्शन निकाल दिया स्टूडेंट्स. सोचो कि मैंने ये एक पार्ट ऑफ द सेक्शन, और वो अच्छा भला सेक्शन है स्टूडेंट्स, ये सेक्शन मैंने निकाल दिया है. मैंने पूछा मुझे इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, जिसका इनर रेडियस इज R1 और आउटर रेडियस इज R2. अभी पता चला क्वेश्चन क्या है? The limits are given to you. ये उसने बोल भी दिया सॉरी. ओके. He won't say. All people are not like you. Vruti is a good one. She will say it. Now you answer for this question. Come on, it's a challenge. अभी अक्षत कभी अब क्या रहा? Yes, students. Anyone? Shobh, can you answer? Shobh, Yes, sir. Rishabh, can you think? हाँ बोलो. शुभ क्या बोल रहे थे? कैसे करोगे इसको? कैसे?
क्या हिंट क्या होगा तुम्हारा? जस्ट ट्राई टू थ्रो हिंट्स। कैसे करोगे? जैसे क्या सोच रहे हो बताओ? सर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। लेकिन ये जो सेमी सर्कुलर एनुलर प्लेट है उसको तुम क्या पकड़ोगे? ये तुम्हारा पूरा सिस्टम है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आर यू टेकिंग एनी एलिमेंट इनसाइड इट? हाँ स्टूडेंट्स, अगर तू इंटीग्रेट करेगा यानी तेरा इनर टू आउटर जाना है, तो यहाँ से यहाँ पे जाना है ना तेरे को, इनर इज हाँ R1 सर। आउटर R1, तो यहाँ पे तुम्हें एक सेमी सर्कुलर टाइप ऑफ रिंग तो लेना पड़ेगा, जिसका जो थिकनेस है, वो dr है, जिसका रेडियस होगा r। हाँ या ना? यस सर। अभी विल दिस पर्टिकुलर, देखो अभी मैंने क्या किया है, प्लीज एवरीवन, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर सिंसियरली थिंकिंग ऑन टू इट, लिमिट्स तो लिमिट्स इज इजी टू गेट इट, लेकिन तुम जैसे लिमिट्स को डिसाइड कर लेते हो ना, देखो ना तुमने लिमिट्स को डिसाइड कर दिया ना, यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन किसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से वहां जाओगे? तुम बोलोगे ना सर अंदर एक रिंग ले लो ना आप, जो सबसे पहला डेरिवेशन हम लोग ने किया था, वापस रिंग पे आ गया हम। तो एक रिंग मैंने यहाँ से शुरू किया, फिर दूसरा रिंग लिया, फिर तीसरा रिंग लिया, ऐसे सारे रिंग को R1 टू R2 लेके जाओ। लेकिन अगर मैं कोई भी एक रिंग लूं तो उसका थिकनेस dr है, उसका डिस्टेंस r है, तो ये रिंग का सेंटर ऑफ मास YCO में होगा ना, यू का फेवरेट XUM तो 0 होगा। Yes, What is sir. YCOM? What is YCOM for this particular semicircular ring? YCOM for semicircular thin uniform ring, बता सकते हो क्या होगा? 2x by pi. Pardon? 2x by pi. Absolutely correct. 2r by pi तो पूरे रिंग का था, है ना? ये तो स्मॉल r है, x नहीं स्मॉल r आएगा ना? हाँ सर सर सर। हाँ, तो ये क्या होगा? ये अभी तुम क्या करोगे? I want to find out YCOM for thin uniform semicircular annular thin uniform annular semicircular ring, पूरे के लिए स्टूडेंट्स YCOM फॉर द एंटायर वन चाहिए मुझे। तो तुम क्या करोगे? तो सर तुम करोगे इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ YCOM into dm upon integration of dm. Yes sir. Now first of all can you find out, तुम्हें YCOM तो मिल गया, ये तुम्हें मिल गया, अभी dm के ऊपर तुम्हें फोकस करना है। चलो अभी सोचो dm कैसे निकालोगे? Sir pi r2 square minus pi r1 square. एब्सोल्युटली, वो तो तुम लिमिट्स के लिए नहीं, वो तुम्हें लिमिट्स में आ जाएगा ना, यहाँ पे हाँ तुम्हारे सर। लिमिट में जाएंगे ना। तुम क्या करो ना, पहले dm को r के हिसाब से लिखो ना। स्टूडेंट्स व्हाट इज सिग्मा? ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, व्हाट इज सिग्मा? Because you have to Mass go for upon area. semicircular. Mass by By area. area. What is the mass of the entire, students, what is the mass of the entire semicircular annular ring, capital M? Everybody agree with that? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes तो इसका एरिया क्या होगा? एनुलर रिंग का एरिया क्या होगा सर? सब will you see that the एनुलर रिंग का एरिया क्या होगा? सर एनुलर रिंग का एरिया will be pi r2 square minus r1 square divided by 2, है ना? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ये क्लियर हुआ सबको मैथमेटिकली? Yes sir. Yes yes. लेकिन हमें इसके बारे में नहीं जाना है स्टूडेंट्स, वी वांट टू गो फॉर द एलिमेंट पार्ट ऑफ इट, डीएम पार्ट ऑफ इट, स्मॉल पार्ट ऑफ इट, डीएम। आर यू गेटिंग इट? नाउ अगर मैं डीएम के हिसाब से लेता हूं तो डीएम आएगा, यानी ये जो एलिमेंट है, दिस इज व्हाट स्टूडेंट, दिस इज माय एलिमेंट इज, जिसका मास डीएम है, तो उसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर इंटू डी आर, इसका एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स? पाई आर इज दिस, और उसका थिकनेस मैंने क्या लिया है? व्हाट एग्जैक्टली द थिकनेस आई एम टेकिंग इट एज dr। हाँ स्टूडेंट्स, इसका थिकनेस में dr ले रहा हूँ, तो कहने से इसका एरिया क्या होगा? पाई आर इंटू dr। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes sir. Yes, sir.
एवरीवन। हाँ बोलो। एनी कंफ्यूजन? सर आपने उसको डिवाइड बाय 2 क्यों किया? सेमी सेमी सर्कल। सर्कल। अच्छा ओके ओके। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितनी बदल गई पीओ। पीओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? यस सॉरी सर। और ये सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं पता चलो तो नहीं पता चला भाई, उसमें क्या है, पूछो ना बिंदास। स्टूडेंट्स अभी भी मैं बोल रहा हूँ, बी सेल्फिश। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर कुछ तुम सिली डाउट भी पूछोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाला टीचर चिल्लाएगा, कुछ बोलेगा, बोलने दो ना, बोलने दो ना। अगर वो डायबिटिक नहीं है तो डायबिटीज उसको हो जाएगा, उसको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर नहीं है तो चिल्ला के उसको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। तुम चिल पिल लो ना। स्टूडेंट्स पढ़ाई के मामले में ऐसे होना चाहिए, सेल्फिश होना चाहिए। पूछो और सामने वाले का पेशेंस देखो करके, पेशेंस है। Now CPU is asking me many a time, she has asked such kind of questions, but I've seen to that I've answered. Yes, somewhere or the other it may be कि चलो कोई सामने रिएक्ट भी करेगा, लेकिन nothing to worry about it, ज्यादा रिएक्ट ही करेगा ना। लेकिन get your doubt स्टूडेंट्स, पढ़ाई के मामले में you have to be in that manner. उसके लिए ईगो को साइड पे रख के आना चाहिए, दूसरे क्या सोचते हैं, to hell with it. ये ध्यान में रखना, हमेशा आगे की लेवल भी पढ़ाई करोगे ना स्टूडेंट्स, तो हमेशा वो ध्यान में रखना, यू हैव टू गेट मार्क्स, यू नीड टू स्कोर, यू नीड टू अचीव। आई गेटिंग इट? और ये होने वाला है, अभी तो कुछ नहीं, आगे जाके देखो व्हेन यू एक्चुअली गो इनटू नीट एंड मेडिकल और इंजीनियरिंग में, सारे खतरनाक वहां पे टीचर्स बैठे हुए हैं जो तुम्हें स्लॉटर करें, लिटरली विल स्लॉटर यू इनसाइड द क्लासरूम, विल थ्रो यू आउट. Every time you'll feel like that I'm getting insulted or I'm getting in that way. तभी क्या करोगे? तभी रोते हुए घर पे आओगे? No, you have to. You have to. It's not like that. Nothing wrong in it. बिंदास पूछने का. Neha says, no, you don't know what our teachers help to be spoiled. Okay, students. तो बिंदास पूछने का. Students doubts. dm upon pi r into dr. ये अभी क्लियर हुआ? यस सर। अभी देखो यहाँ पे अगर तुम्हें अभी इसको सॉल्व करना है तो अभी आगे तुम कैसे सॉल्व करोगे बताओ? Anyone now can you think how do you go about with this? इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे अभी? We will put the values to वेरी r गुड। upon यानी pi. कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करोगे तुम, कैसे करोगे? YC और DM। हाँ, डीएम को सब्स्टिट्यूट, यानी भी देखो तुमने डीएम को सब्स्टिट्यूट करोगे तो डीएम को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे? यहाँ पे। क्या यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करोगे? नो सर। No, sir. No, sir. यहाँ पे डीएम को क्या लोगे तुम? कैपिटल एम लोगे? यस यस सर। सर। ध्यान Yes, से देखना, sir. ध्यान से देखना। अगर तुमने डीएम को यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएम को तुम यहाँ पे क्या लोगे? m इंटू पाई इंटू आर इंटू डी आर, और इससे मल्टीप्लाई करोगे। एवरीबडी लिसनिंग केयरफुली। स्टूडेंट्स देखो, एक पॉसिबिलिटी ये है, डीएम को तुम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तुम? यस सीमा से सर। मल्टीप्लाई करोगे। सर ओके, तो देखो तुम्हारा, डोंट यू थिंक सो दैट योर कैलकुलेशंस आर गोइंग टू इंक्रीज? m इंटू पाई आर इंटू डी आर, 2 ऊपर जाएगा, नीचे पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, हाँ या ना? Yes. इंटीग्रेशन ऑफ dm विल बी m। एग्रीड? लिमिट्स तो है तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें इसको सॉल्व करना है। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस। लेकिन डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम विल बी कैपिटल एम। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को और दूसरी तरीके से लेके जा रहा हूँ, बिकॉज आई डू फील दैट हु आस्क्ड, शुभ आस्क्ड या रक्षित आस्क्ड, इस सर हमने नीचे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को एम क्यों लिया है ना? यू लास्ट में ना, हु आस्क्ड? शुभ, यू आस्क्ड? यस सर। अभी देख शुभ, अभी यहाँ पे मैं अभी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को एम नहीं लेता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अभी now I'll go for dm को I'll write down in terms of now sigma and not in terms of this. हो सकता है, क्यों नहीं? sigma is the surface mass density, तो यहाँ पे देखो is equal to integration of ICM, यानी ये हो जाएगा 2 r upon pi into dm
What is dm? So it is sigma pi r into dr integration r1 to r2. Agreed? Yes, sir. Yes. Upon इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को वापस मैं लिखूंगा सिग्मा पाई आर इंटू डी आर r1 to r2. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Now solving it further, is there any cancellation over here? स्टूडेंट्स तो बोले सर अगर आप रेशियो लेते हो स्टूडेंट्स तो सिग्मा तो बाहर आ जाएगा. देखो 2 बाहर आ गया, सिग्मा बाहर आ गया, पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिग्मा बाहर आ गया स्टूडेंट्स, तो सिग्मा कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स. Yes, एग्रीड? sir. Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे सर r इंटू आर विल बी r स्क्वायर इंटू डी आर r1 to r2 है ना. डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर में क्या होगा सर? आपने सॉरी पाई भी बाहर आएगा स्टूडेंट्स, आई मिस्ड आउट पाई. ये पाई बाहर आएगा ना. हाँ सर. इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? r इंटू डी आर r1 to r2. इज दिस क्लियर? यानी स्टूडेंट्स अगर तुम डीएम को इंटीग्रेट करते हो तो गो विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा. अगर तुम कैपिटल एम से लोगे तो सिंपली अगर तुम्हारे न्यूमरेटर में कैपिटल एम आ गया ना तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को नीचे कैपिटल एम ही लिखो. आर यू गेटिंग द नैक ऑफ इट स्टूडेंट्स, हाउ टू गो अबाउट विद दिस? Yes. Yes, sir. अभी इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन. नाउ सॉल्विंग दिस पार्ट ऑफ इट. फिर हम दूसरा मेथड भी करेंगे. दूसरा मेथड भी करेंगे जो तुम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को एम लोगे वो तुम करना और आंसर टैली करना दोनों केस में. एग्रीड? ना यहाँ पे देखो इट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन पाई. So can you tell me what is integration of r square into dr? Cube by 3. R cube by 3. ये होगा r cube by 3. लोअर लिमिट r1 अपर लिमिट r2. डिनोमिनेटर में क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ r R into square by R square r by square 2. by 2. लोअर लिमिट r1 अपर लिमिट r2. Then how do you go about with this? ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कहना से 4 by 3 पाई आ जाएगा. हाँ स्टूडेंट्स ये 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आएगा. Yes, sir. Yes, sir. Are you getting it? So 4 upon 3 pi. 4 upon 3 pi. Is it clear students? Yes, sir. Yes, sir. Now if I say this is r cube, now substituting it, can I substitute r cube yani capital R2 and R1? So can I say this is R2 cube minus R1 cube upper limit minus the lower limit? Yes, sir. yes. नीचे होगा R2 square minus R1 square. Yes, sir. Can I say this becomes a cube minus b cube का formula क्या होगा? So what's the formula of a cube minus b cube? A minus b into bracket a square plus ab plus b square. Yes, sir. ये होगा a square minus b square का फॉर्मूला क्या होगा? a A minus b plus B into A plus. a minus b into bracket a plus b. a minus b cancel हो जाएगा. Yes, sir. Agreed? Agreed? Yes, sir. Now can you tell me what exactly the center of mass for this? The center of mass for this particular system is given by what? It's actually the YCOM. And what exactly the YCOM I'll consider will be, what's the formula? So it's 4 upon 3 pi. Students, over here I'm writing it. 4 upon 3 pi. Numerator में क्या होगा? A minus B cancel हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? It'll be R square plus R1 R2 A square plus AB plus B square R1 square, the whole upon R1 plus R2. क्या ये क्लियर हुआ? Yes. स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now can you get an answer with respect to this part of it? चलो solve करो. Solve करो students.
Since all the students, are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. Rudy, me, Valentino, Taksh, are you getting it? Taksh, Swayam, Yes. Shobh, Yes, sir. Swayam, Shobh. Okay, Rishabh, Rishika, Pratham, all. Poj. Pihu, getting it, Pihu? Yes, sir. तुम कितना रो रहे हो? आप क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? Why are you feeling so sad? आप क्यों? No, sir, I understood. Okay, नया clear है? Yes, sir. Okay, fine. Kushali, is it clear to you? Yes, sir. Okay. सर हाँ बोलो. सर आपको dm by pi r into dr कैसा है वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. ये जो ये देखो ना, ये DM क्या है? ये मेरा सिर्फ रिंग एक एलिमेंट है. यस सर. तो ये जो एलिमेंट है उसका जो नीचे का पोर्शन है ना, थिकनेस, क्योंकि हम इंटीग्रेट करेंगे R1 टू R2 ना, तो ये जो नीचे का पोर्शन जो है यस ना, सर. उसका ब्रेथ पार्ट ऑफ लेंथ मैंने लिया है. तो ये एक्चुअली लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, वो एरिया बन गया मेरा. पाई आर सेमी Sir, got सर्कल it. एंड लेंथ. ओके, द रिंग वाज बेंड, तो वो पाई आर हो गया लेंथ, और ब्रेथ क्या होगा? DR है, लेंथ इनटू ब्रेथ. करेक्ट? Yes sir, got it. Thank you sir. Please, now I want the second method to be worked out. Hope you're getting it. What am I trying to say, students? क्या ये पार्ट इरेज कर दूं मैं स्टूडेंट्स? ये इरेज कर दूं अभी? No, Yes, no, no, sir. sir. 2 minutes. Oh my God. Second part, students, those who are able to trace it. अभी second part के लिए मैंने क्या बोला students? Now don't use sigma का term, students. Now you go for DM. जो यहाँ पे DM है ना students, उसको ये substitute करो. लेकिन नीचे integration of DM को capital M लिखना. और फिर see what answer you're getting it. You should get the same answer. 4/3 pi R2 square plus R1 R2 plus R1 square upon R1 plus R2. और तुम्हें वही मिलेगा. Students, एक simple observation देखो, please. Without solving mental maths. Students, mental maths. Without solving, अगर तुमने न्यूमरेटर को ये डाल दिया, तो क्या से ये पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा? Yes, sir. एग्रीड? तुम्हारा ये यहाँ पे चला गया. एग्रीड? Is this clear? Yes, R sir. into DR will be equal to what? R square. है ना? Yes, sir. 10. You'll be getting the answer accordingly. Can I erase the students? Yes, sir. Okay. Now, students, I'll be going with respect to certain questions related to your center of mass when you try to add area or you try to remove area. The next part, students. Now, this is an important part, okay? Before going for the students, I want you to crack few questions, okay, from your module. Students, you will have your module in front of you. Yes sir. No, sir. Just a minute.
Okay, who's having this medical issue? Izar? Yes, Izar, मैंने तुम्हें अभी देखा, अभी अभी देखा तुमको। अरे तुमको मैंने एंट्री दिया ही नहीं, तुम आगे कैसे है इज़ार? और क्या हुआ तुम्हें? मैंने एडमिट तो किया नहीं तुम्हें, पीयू ने एडमिट किया क्या? हाँ इज़ार? Okay, students, now please pay attention. Now I want you to go for students, did I give you a question on to finding out the center of mass of a rod whose length is whose linear density is a plus bx? हाँ students, दिया है मैंने ऐसा कोई Yes, क्वेश्चन sir. ये किया है ना हम लोगों ने? Yes, sir. Okay, fine. Okay, students. Page number 109. Students, do you see page number 109? Yes, sir. Okay. Okay, Izar, but you need to post me. That's what, okay? Then I can send you. Students, on page number 109, there is an introductory exercise given students, okay? Around 8 questions, okay, students? First 8. Ninth one depends on to area. No need to work out the ninth for the time being. And students, eighth one, already you have done it. देखो तुम्हारा 8th question देखो students. Find the distance of center of mass of a uniform plate having semicircular inner and outer boundaries of radius A and B. मैंने कौन सा radius दिया था? R1 और R2 दिया था, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे उन्होंने A और B दिया है, तो इनका आंसर क्या होना चाहिए? इनके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? हमें आंसर क्या मिला था? हाँ स्टूडेंट्स, क्या मिला था? 4/3 3 pi. पाई, और ब्रैकेट में क्या मिला था? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 Yes, अपॉन sir. R1 Yes, sir. यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा आंसर? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB अपॉन A प्लस B। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन हम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन दूसरी मेथड से भी करेंगे, बाय एरिया मेथड। स्टूडेंट्स, एरिया के हिसाब से बताऊंगा, अभी फिर तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा फास्ट है। Okay, you can solve the same question by area method, but I need to explain you area method क्या है to find out the center of mass. Okay, we'll be going for that later on. But for the time being, students, I wanted to solve question number 1 to question number 7 of page number 109. These are easy questions, slightly more onto theoretical part also, but think and give answers wisely. Give a correct reasoning for it, students. Okay, everyone, page number 109 of your module, question number 1 to 7. Is it clear? Yes, sir. Okay, please try to crack it. Page number 109, module, and solve problems.
Please, students, one who finish with 1 to 7 can unmute and start answering, students. But give me a correct reasoning for it. Yes, anybody? Yes, Manomaya, why so early? Manomaya, why do you enter so early? Sir, I was there in meeting, but I got disconnected from last 20 minutes. Oh my God. Come on, Harshal, answer. Harshal, can you answer for the first one, Harshal? Harshal, can you answer? Aishman from Khargar, can you answer? Aryan from Mira Road, can you answer? Anaita, Akshat, Farhan,
Yes, students, anybody, the first answer. What is the difference between the center of mass and the center of gravity? Anyone? Students, can anybody tell me what is the difference between center of mass and center of gravity? Center of mass is the main position of the body. Position of the body. पीयू क्या कर रही हो यार, पूरी बैंड बजा रहे हो फिजिक्स की. Main position of the body. Piyu, is that what I had explained you? Is that what I had explained you? Main position of the mass of the body. Sorry, sir. Main? Position of the mass of the body. Center of mass. Piyu, what English you are speaking it? आपको समझ में आ रहा है ना what I mean to say? I didn't understand what are you saying because your English is totally wrong and your approach towards physics is also totally incorrect. Is that what I explained to you? And you're Sir, giving the wrong answer so confidently you're giving it. Sir, average center of mass is the average location for the mass distribution of the body. Average location of mass distribution of the body. हाँ. sir, can I try? Yeah, bolo. Sir, center of mass is a point where entire mass of the body is supposed to be concentrated, whereas center of gravity is the point where entire weight of the body is concentrated. Absolutely correct. Where the entire mass of a body we supposed to be assumed to be concentrated at that particular point we consider, and that's the center of mass. Because for symmetrical objects it's different, and for asymmetrical objects that's why you use the word suppose. And in spite of telling it, you are so confidently trying to give your own words, your own way of approach towards physics, and then you think that you are correct, and then you say you're not able to understand. This is how you would deal with subjects, you know that? Whatever you think, you feel like that you are correct. When you don't go through the books properly and then you just simply vomit, it's not good. I thought so you'll give a correct answer. I was really expecting कि नहीं एक strong answer मिल जाएगा. उसके लिए भी घुमा फिरा के you try to throw across. Anita, now if I happen to give you a symmetrical body, so where exactly symmetrical, the center of mass for a symmetrical body will lie? On the axis? On the axis of symmetry. Absolutely correct. For a given axis of symmetry. And asymmetrical body के लिए फिर अगर तुम देखोगे तो where exactly it will lie, जहाँ पे तुम्हारा mass ज़्यादा distributed होगा. Yes, sir. दूसरी बात, the center of mass lie inside the matter itself only, or can it lie outside the matter? Inside? If I go for a ring, मुझे बता ring क्या, अभी हम लोगों ने derivation किया था, semicircular ring. So what is the center of mass was lying in the matter of the ring, or was it outside the matter? Oh, okay, sir. Outside the matter. I said it very clearly. Does the center of mass can lie inside the matter or outside the matter? So it can lie outside the matter, but the entire mass of a body is supposed to be concentrated at that point. Are you getting it? So Yes, students, sir. that's a point of difference between center of mass and center of gravity. Students will be dealing more precisely when I speak about rotational motion. लेकिन मैंने इसका definition बता दिया पहले ही. Center of gravity is a point, students, where the entire weight of the body is supposed to be concentrated. जहाँ पे तुम्हारा algebraic sum of the total moment of force about that point is equal to 0 and the body maintains equilibrium. The body maintains equilibrium, either translational equilibrium or rotational equilibrium, students. That is center of gravity. And center of gravity can lie inside the matter, also can lie outside the matter. The line joining the center of gravity and the center of the earth will always fall within the body itself only. अगर वो बॉडी से बाहर गिरता है तो इंसान, तो then it becomes unstable equilibrium. तभी जाके स्टूडेंट्स, जब भी तुम माउंटेन को क्लाइंब करते हो, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर तुम माउंटेन को क्लाइंब करते हो तो मुझे बताओ, क्लाइंबिंग के टाइम पे, अगर तुम माउंटेन को क्लाइंब करते हो तो क्लाइंबिंग के टाइम पे क्या तुम आगे की तरफ लीन करते हो? डू यू लीन फॉरवर्ड और डू यू लीन बैकवर्ड? नाउ व्हाइल क्लाइंबिंग अ माउंटेन स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड. फॉरवर्ड. अभी देखो ये माउंटेन है स्टूडेंट्स, अगर तुम ऊपर की तरफ जाते हो, चढ़ान पे चढ़ते हो, तो हाउ डू यू?
तो तुम लीन आगे की तरफ करोगे स्टूडेंट्स, यू लीन फॉरवर्ड। तो स्टूडेंट्स ये तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो लुक ओवर योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टूडेंट्स इज फॉलोइंग अहेड ऑफ यू, just in between your 2 feet or slightly ahead of you. Line joining the center of gravity and the center of the earth. Students, ये जो फोर्स है वो तुम्हें होल्ड करके रखता है। अगर बाई चांस तुम्हारा पोजीशन थोड़ा सा भी अगर मैंने ऐसा चेंज कर दिया स्टूडेंट्स, थोड़ा सा भी मैंने पोजीशन चेंज कर दिया तो क्या होगा? देखो, where is the force falling behind you? You might topple. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? वही तुम नीचे की तरफ उतरोगे, जब भी तुम कमिंग डाउन तो तुम लीन बैकवर्ड करते हो, जब तुम स्लोप से नीचे की तरफ आते हो तो यू लीन बैकवर्ड, तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी फॉलिंग बिहाइंड, इट विल होल्ड इट। तभी जाके शायद तुमने कभी कभार देखा होगा या तुम एक्सपीरियंस किए होगे, सपोज इफ यू हैपन टू गो फॉर हॉर्स राइड समवेयर इनटू दी लोनावला का स्लोप्स के ऊपर, जब भी लोनावला के स्लोप्स के ऊपर या कहाँ पे तो माउंटेन के स्लोप्स के ऊपर स्टूडेंट्स अगर घोड़े पे बैठते हो तो जो हॉर्स के गार्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो जब इस स्लोप के चढ़ान के ऊपर जाते हैं तो उस टाइम पे तुम्हें चिल्ला के बोलेंगे आगे आओ, आगे बेंड करो, आगे बेंड करो। वो जानबूझ के चिल्लाते हैं तुम्हें। तो आगे बेंड करने से होगा क्या? तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल फॉल अहेड ऑफ इट। अगर तुमने परपेंडिकुलर बैठा तो विल गो बिहाइंड, विल फॉल डाउन। Are you getting it? Students should know the difference between center of mass and center of gravity very clearly. Okay. And center of mass is a point which can lie inside the matter, students, and can lie outside the matter. And how do you locate the center of mass? We can have the location of center of mass for a system of particles. Are you getting it? For all the particles, we consider the force can act at one point, acceleration can act at one point, velocity can act at one point, momentum can act at one point. If I tell you to locate this position of the center of mass, students, so we can locate the position of center of mass for two such particles. Two particles can be discrete, can be placed at along x-axis or along y-axis or z-axis. M1, M2, M1, M2 along x-axis. So M1 M1 x1 plus M2 x2 upon M1 plus M2. M1 y1 plus M2 y2 upon M1 plus M2. Likewise, this will be z-axis. अगर मैंने rectangular coordinates में दिया center of mass for n number of particles, so M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 upon M1 plus M2 plus M3. It's like that. Can you find out the distance of the center of mass from the origin? Yes, why not? Origin का तुम्हें 0,0 मिल रहा है और वहाँ के तुम्हें center of mass के coordinates मिलेंगे, तो अंडर रूट x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, तुम्हें distance मिल जाएगा. You have done all these particular questions of position of center of mass students. Okay, for continuous distribution also as well as for discrete manner. Okay, second question. The center of mass of a rigid body always lies inside the body. Is this statement true or false? Now, Anaita, can you answer? Yes, sir. False. False. So, can it lie inside or can it lie outside? Who answered Both. right now? किसने आंसर दिया? वृत्ति, ये लेक्चर चल रहा है. वृत्ति, ये लेक्चर चल रहा है. Are you getting it? These are not doubt lectures. Vruti, again I'm telling you, these are not doubt lectures. This is continuation of the syllabus. Okay, Vruti? If I entertain you, that doesn't mean that you have to just go on in that case. If I start entertaining you, there are other students also to whom I have to entertain. तो हम ये lectures को हम दूसरे lectures में convert कर देते हैं. Okay, Vruti? Students, what exactly you said is center of mass of a rigid body always lies inside the body. Is the statement true or false? So the answer will be false. It can lie outside the body also. Is that clear? It can lie outside the body also, students. Third question. The center of mass always lies on the axis of symmetry if it exists. Sir, false. Is this statement true or false? Sir, false. You false. Sir, it can lie on both. Both in the sense?
Sir, if the body is uniformly distributed, it can lie on the center where masses are constant. And if one of the masses is greater, then it will be lying in the towards the greater side, greater mass. एक मिनट, हाँ एक सेकंड शुभ, तुम क्या बोल रहे हो? कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट? Sir, if a uniform rod, अच्छा यूनिफॉर्म अगर तू यूनिफॉर्म बोलेगा तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। yes नॉन sir, यूनिफॉर्म बोलेगा ना तो मास नॉन यूनिफॉर्म रख रहा है ना। हाँ sir, हाँ तो हाँ एक साइड पतला मैंने लिया है और एक साइड थोड़ा सा मैं मोटा ले लेता हूँ। हाँ अभी बता। sir, towards the greater mass. तो यहाँ पे सिमेट्री है। Yes sir, symmetry is there. तो सिमेट्री का मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर ट्राइंग टू गो फॉर? No sir, there is no symmetry. व्हाई देयर इज नो सिमेट्री? Sir, by cutting on the axis, there should be both two मतलब side similar होने चाहिए. Two sides similar यानी are you going for symmetry with respect to length or symmetry with respect to the masses? Sir, length. तो अगर मैंने रॉड L दिया है और परफेक्ट स्ट्रेट रॉड है, भले एक साइड मास ज्यादा एक साइड मास कम है, तो उसका सिमेट्री मिलेगा ना मुझे। सेंटर में आएगा ना। Yes sir. एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो सेंटर में आएगा ना। Yes sir. Sir, पर mass center of symmetry पे lie करे, axis of symmetry पे lie करे, ये थोड़ी ना, मतलब greater mass के उधर होगा। ये मुझे पता। द सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ इट एग्जिस्ट। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या? व्हाट एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस? शो Sir, by cutting, it should divide both the parts in equal half. Equal. yes, that means it should divide the part into equal halves. So that is what it means. यानी अगर suppose मैं कोई भी geometrical shape, students, when do we get a proper axis of symmetry? For regular objects or for irregular objects? Regular object. Regular. तो ये बताओ, is it a regular object or an irregular object? हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने पूछा है the center of mass always lies on the axis of symmetry if it exists. If the axis of symmetry exists, does it lie all the time onto it? No sir. Not necessarily. क्योंकि उसके लिए तुम्हें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए स्टूडेंट्स. If the mass is uniformly distributed, are you getting it? Then only you will be able to get for symmetrical bodies we get the axis of symmetry. यहाँ पे तुम मास को यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट जाएगा स्टूडेंट्स विल बी प्रिसाइजली गोइंग विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. स्टूडेंट्स, अगर जब भी मैंने ये सेमी सर्कुलर रिंग लिया, सेमी सर्कुलर प्लेट लिया था, तो ऑफ कोर्स वी हैड एन एक्सिस व्हिच वाज ये सिमेट्रिकल एक्सिस था स्टूडेंट्स. Was the mass was uniformly distributed on either side? Yes. ये भी पूरा प्लेट था, तो was the mass was distributed uniformly on either side? Yes. There was uniform distribution of mass. So that is my axis of symmetry. So अगर कोई axis of symmetry exist करता है for uniform distribution of mass, yes, then center of mass will lie on the axis only, symmetrical axis. लेकिन अगर कोई non uniform mass दे दिया स्टूडेंट्स, non uniform mass दे दिया, then how do you put forward the axis of symmetry? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तुमने भले ये हेवीनेस रखा, ये हेवियर मास रखा स्टूडेंट्स, ये लाइटर मास रखा, लेकिन अगर मैंने इसका लेंथ वाइज सेम रखा, डायमीटर कांस्टेंट रखा, एंड इफ आई डिवाइड द फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो ये है मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री. मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन will my center of mass now lie on the axis? No, it will go towards the heavier mass. कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स?
Yes, sir. Yes, sir. Of course, that's why Shubh said it's false. वापस बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक सिंपल डायग्राम देता हूँ. मैंने तुम्हें एक स्क्वायर दिया, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, एक स्क्वायर दिया, ओके, और ये स्क्वायर मैंने 4 ब्लॉक्स में दे दिए स्टूडेंट्स, और ये चारों इक्वल मासेस है. क्या ये सिमेट्रिकल है स्टूडेंट्स? ये स्क्वायर sir. ब्लॉक दिया है, चारों 4 स्क्वायर चारों. स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. The side of the square is 2 meter. Everybody listen carefully. Angle between them is 90 degree, and the mass is uniformly distributed. So how many axes of symmetry you have it over here, students? 2. 2. इसका center of mass कहाँ पे होगा तुम्हारे हिसाब से? Sir, at the At the center. center. At the center. At the center 0,0 होगा. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे दे दिया m, यहाँ पे दे दिया m, यहाँ पे दे दिया 2m, यहाँ पे दे दिया 2m, अभी बताओ, अभी भी स्क्वायर है. Sir, it will be Towards shifted the right towards the side. right Towards side. right. Right side. देखा अभी आंसर है. That is what Shubh was trying to say. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Are you getting it, students? Yes, sir. It's a square lamina. It's a square lamina. So axial symmetry will go with respect to what? The symmetrical part of it, which divides the geometrical shape into 2 equal halves. Equal half, that means we consider the dimensions of it, length and breadth, not with respect to the area part of it, or the not with respect to, sorry, mass or the density of it. Students, axis of symmetry doesn't go with respect to the density part of it, the mass part of it. Agreed? So यहाँ पे अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ का तुम देखोगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये दो मासेस है m और m, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तुम बोलेगा यहाँ पे. Agreed? Exactly mid point. आया ना? Yes, sir. ये 2m और ये 2m है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा. Agreed? Yes, sir. अभी कहना है सर ये तो मेरे 2 पार्टिकल्स हो गए, सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स. ये हेवियर है और ये लाइटर है. Can I find out the center of mass for this and this particle? Will it lie towards the lighter particle or will it lie towards the heavier particle? Towards heavier. Heavier part. पहला सेंटर ऑफ मास पूरा लोकेशन यहाँ पे था, अभी वो किस तरफ जाएगा? लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा? सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किस तरफ होगा? So towards right. टुवर्ड्स राइट. तो यहाँ पे तुम्हारा सेंटर ऑफ मास आएगा. समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. यानी स्टूडेंट्स एट टाइम्स अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो ना, तो तुम लोकेट कर सकते हो. अगर तुम्हें ये 2 मीटर दिया है, ये 2 मीटर दिया है, तो तुम्हें ऑप्शंस में कौन सा आंसर ढूंढना है? कौन सा आंसर ढूंढना है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो, कौन सा आंसर ढूंढना है तुम्हें? ऑप्शंस में आंसर ये ढूंढना है कि तुम्हारा x कोऑर्डिनेट 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा. आया ना? 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा. y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 आएगा. Agreed? Yes, sir. Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. Vruddhi, is it clear, Vruddhi? Vruddhi, where are you, Vruddhi? Yes, sir. Don't worry, Vruddhi, होगा, सब कुछ होगा. Okay, you are a follower of Buddha. Are you getting it? Very nice structure. Buddham Sharanam Gacchami, something of that sort, है ना? No, sir. I practice Nichiren Buddhism. So it's Okay, no, it's good. It's good. तो देखो कितने शांत बैठे हैं तुम्हारे बुद्ध देवता, कितने शांत बैठे, एकदम शांत रहने. Okay. yes, sir. Okay, students. Next question, students. Fourth one. Can you give me an answer for the fourth one, students? If all the particles of a system lie in a YZ plane, the x coordinate. Since the x coordinate of the center of mass will be 0, is this statement true or false? True. Sir, true. How? So because we don't have an x coordinate, so it will be 0. Very good. X coordinate नहीं होगा. So if all the particle system is in a YZ plane, students, YZ plane के ऊपर है, यानी there is no mass distributed along the x axis, students.
Since there is no mass distributed along the x-axis, so there is no center of mass considered to be along x-axis. Okay, so of course this statement is true. Fifth one. What can be said about the center of mass of a solid hemisphere of radius r? Solid hemisphere बोला students, solid hemisphere, huh? Without making any calculations, कुछ calculation करने की जरूरत नहीं है. Okay. Will its distance from the center be more or less than r by 2? Less than r by 2. क्या बात है, किसने आंसर किया? Who's answered this? Sir, Sir, PU. PU. क्या बात है पियो, वेरी गुड. देखा अभी एकदम सही आंसर दिया. पियो वेर आर यू? ये तो Yes, शुभ आ गया. ओके पियो, लेस देन r by 2. क्यों, रीजन क्या है पियो? sir, at the starting of the lecture you said, so I know. Okay, can you give me the exact formula? If I give you a radius r, can you give me the exact position of center of mass for a solid hemispherical? 3r by 8. क्या बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट. देखा कितनी शार्प मेमोरी है. फिर इसको बोलते हैं शार्प मेमोरी. स्टूडेंट्स नीट के लिए, नीट स्टूडेंट्स जो मेडिकल के लिए जाते हैं उनको शार्प मेमोरी की जरूरत होती है. उनको उनको एक थोड़ा सा रट्टा मारने की आदत ज्यादा रहती है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है स्टूडेंट्स. Students, to memorize and keep it also, it's a challenging task. Students, I would like to make it very clear, जिस students को NEET और JEE को crack करना है, ये दोनों चीज को crack करने के लिए students तुम्हें conceptually strong तो होना ही है, लेकिन at the same time students you should have a good memory power. तुम्हारा जितना memorize हो सकता है और तुम recollect कर सकते हो, जो चीज तुमने 3 महीने पहले पढ़ी है, क्या 3 महीने के बाद में तुम वापस read, that is more important. That is why students, you should always play a memory game. I don't know, did I say about that to you all or not? So tomorrow gray matter becomes much more active. Your right side and the left side of the brain both will become more active in that case. और रात को सोने के टाइम पे तुम्हें ये गेम खेलनी चाहिए, either with your mom or dad, whoever it's free, before sleep. एक छोटा सा memory game आता है students, and of your age you can get it. और एक simple तुम्हारा तुम 12-13 साल का भी एक गेम उठाओ ना students. सिंपल तुम्हें एक गेम मिलता है स्टूडेंट्स, ऐसे कार्ड्स मिलते हैं. स्टिल आई प्लेड कार्ड्स मिलते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें सारे फिगर्स होते हैं और तुम्हें उसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स रखने हैं. तुम और तुम्हारे कॉम्पिटिटर को वो कार्ड तुम्हें पहले देखना है, उसके मैचिंग निकालना है, और मैचिंग अलग अलग जगह पे रखा हुआ रहता है. आई गेटिंग. और उसके लेवल्स होते हैं फिर उसी के अंदर. तो तुम देखोगे 5 look it for 30 seconds, give it to your partner, whoever is doing it for 30 seconds, फिर अंदर प्लेस करो, सारे ऑब्जेक्ट्स को निकालो, फिर तुम पिकअप करना है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को निकालते हुए, किसका ज्यादा निकलता है. सिंपल. तुम्हें पता है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे था, दूसरा ये है तो उसका ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल वहां पे था, और उसका टफनेस फिर बढ़ता है, लेवल्स बढ़ती है. तो ये तुम्हारा ट्राई टू प्ले इट. सी, you won't believe, your mom and dad will say, oh god, I'm not able to catch you. Because स्टूडेंट्स वो एज फैक्टर हो जाती है ना पेरेंट्स की, तो मेमोरी पावर कम हो जाता है उस टाइम पे. और जब भी तुम उनको ये खेलने के लिए बोलोगे ना, दे विल लिटरली स्ट्रेस देमसेल्फ इन दैट. यू विल बी मोर स्मार्टली वर्किंग ऑन टू इट. लेकिन तुम अगर खेलोगे ना 6 साल के या 8 साल के बच्चे के साथ में, तो तुम हारोगे. चैलेंज, तुम लोग हारोगे, वो नहीं हारेंगे. दिस इज हाउ इट गोज. So that is also good quality to be worked out with. Okay, and it's hardly 10 to 15 minutes ka game hota hai students. It's not like that, but this is something which you need to. Okay. What can be said about the center of mass of a solid? So this answer is given by none other than Pihu. Okay. All the particles of a body are situated at a distance r from the origin. The distance of the center of the mass of a body from the origin is also r. Is the statement true or false? Students? Sir, false. Why? Sir, sir, particles are lying at a distance r, so it will form a circle. So the center of mass will be at the origin only. 0,0. अभी तक ये उन्होंने ये नहीं बोला कि सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल भी हो सकता है. Yes, sir. Sir, but it won't lie on the distance r.
एक second. What he said, Shubh, is absolutely correct. Students, see what he put forward. All the particles of a body are situated at distance r from the origin. अभी शुभ के हिसाब से सारे particles are at a distance r from a particular place. Agreed? So all the particles of a body are situated at distance r from the origin. ये origin है, students. The distance of the center of mass of a body from the origin is also r. Okay, distance of the center of mass of the body from the origin is also equal to r. And the distance of अगर कोई मैं छोटा सा particle लूँ तो उसका distance भी r है यहाँ पे. Agreed? Now suppose अगर मैं इसका आंसर लूँ तो जरूरी नहीं है कि it can be in circle, it can be a hemisphere also. Now can I say are these particular particles are distance r? Yes. यहाँ पे शुभ के हिसाब से ये भी डायग्राम सही है, ये भी डायग्राम सही है. तीसरी बात, उन्होंने ये नहीं बोला है कि पार्टिकल्स आर इन डिस्क्रीट मैनर और कंटिन्यूस मैनर. आया ना? तो अगर मैं सपोज एक पार्टिकल लूं, दूसरा पार्टिकल लूं, तीसरा पार्टिकल लूं, चौथा पार्टिकल लूं, are you getting it, students? Yes, sir. So will my center of mass will lie on the circumference? No, it will be always lying between anywhere where r equal to 0 to r to less than r by 2. Sorry, will be less than r. Will less than r. यानी तुम्हारा आंसर क्या होगा? Either equal to 0 or r. तो it will be less than or equal to r, students. Are you getting it? The center of mass will be always less than or equal to r. We consider in that case. More precisely, I'll consider will be less than. अगर suppose मैंने ये particle एक ही particle दिया, student. देखो ना students. अगर suppose मैंने एक ही particle दिया, तो उसका तो उन्होंने r बोला ही है ना? शुभ, उसका तो बोला ही है ना? इसका center of mass तो geometrical center ही होगा, and that is equal to r. Yes, sir. क्योंकि इसको मैं origin ले रहा हूँ. अगर मैं इसको origin ले रहा हूँ, तो ये मेरा x coordinate हो गया. So can I say this is x, 0? So can I say it's r, 0? Yes, So sir. will it have xum? Yes, that is equal to r. क्योंकि उन्होंने particles बहुत नहीं बोले. एक I can take one particle. कोई student एक particle ले सकता है. कोई student n number of particles circumference में रख सकता है. कोई semi circle में रख सकता है. कोई continuously distributed करेगा. कोई discrete manner में करेगा. Agreed, students? Is this clear to all of you all? Yes, sir. Okay. The next one, students, 7th one, now we'll picking up in the next lecture, students, okay? And 8th one, we'll be redoing it with respect to concept of masses. Okay, because mass ka concept, I need to explain you that, and then we'll move further ahead. Okay, students? But kindly revise the formula. Formulas revise karte rehna. Okay? So we'll wind up the lectures. Okay? Thank you, sir. Have a good Thank day. you, sir. Thanks. Bye-bye. Thank you, sir. Bye, sir. Yes, Susan. Bye. Hi, Ruti.